Good afternoon, all of you. So, welcome to our new channel, एग्जामपुर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. आप सभी का एग्जामपुर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्वागत है. सो आई एम देयर टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो इन दिस सेशन आई विल ट्राई टू डिकोड साइंस एंड टेक्नोलॉजी syllabus both for prelims as well as for mains. Science and technology, it forms an important part for prelims if you consider it, because generally more or less 15% of the questions asked in prelims are from science and technology. Second thing, if we analyze the previous year questions, then we'll find that UPSC is more or less emphasizing on dynamic part, and that too on the analytical part. So UPSC basically demands that if something is happening in the recent times, we should be aware of that. We should know how the technology work. What is the basic theme behind the technology? ठीक है ना? UPSC does not demand that we should study in detail, as we are not preparing for NEET, IIT and all those papers. Just we should have the basic awareness regarding the technology, and apart from that, we should know its application part. If we will study, if we will analyze the papers, if we will analyze the previous year papers, we will see that UPSC always asks the application part, whether it is in the field of medicine, whether it is in the field of agriculture, or whatever it may be. It will ask the application part, ethical issues involved in it, if it is in the case of suppose biotechnology, gene editing techniques, and we should make ourselves completely aware regarding the regulatory mechanism if initiated by the government or at the international level. So with this we will start with science and technology. First of all, we will see how the questions are asked, and we will see how many questions have been asked in 2020, 2019, and after having a detailed discussion about what are the topics to be studied for prelims, we will move on to mains. We will just see how the questions are asked to make you familiar that how to study science and technology. We should restrict ourselves to the definition, or we should move ahead regarding its application part. Okay, so with this I am here. This is Appu. So we will start. See, decoding of science and technology syllabus from prelims mains. Okay, so now see, prelims trend analysis. In 2020, there were 11 questions. How much? 11 questions. In 2019, 11 questions. If you see in 2018, it was around 13. And if you see in the case of 2017, it was 6. So see its importance. 11 questions are asked. But if you'll see science and technology, in combination with environment, more or less 15 questions are asked. 15 questions are always asked. That means 15%. It contributes 15% towards the prelim syllabus. So see how important it is. ठीक है? Now, so UPSC syllabus. These things have been mentioned in the UPSC syllabus. This is okay. So let us have a brief idea about what UPSC demands. After that, we'll go into detailing of each and every topic. Okay, let us read it once. Science and technology development and their application, and effects in everyday life. More or less, this is also application based. Okay. Achievement of Indian science and technology. Achievement of India in the field of science and technology. Okay. Indigenization of technology and development of new technology. Just like we are having our own cryogenic engines, cryogenic engine, ठीक है, cryogenic engine. We are having our own
IRNS, Indian Regional Navigational Satellite System. Awareness in the field of IT, awareness in the field of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issue relating to IPR. So this is the syllabus that is mentioned in the UPSC. Now we will study in detail. We will study in detail what are the topics to be covered in each mentioned broad topic. Okay. So let us see basically. Okay. If we'll analyze 2020 papers, see, science and technology is a very ambiguous subject. It's a very huge subject. We have to cover from 6th to 10th NCERT and selective chapters from 11th to 12th NCERT, just like environment and biotechnology. And apart from that, we have to make ourselves aware regarding the recent development in the science and technology. Regarding the recent development in the science and technology. If there is some recent development in the field of defense, space, biotechnology, genetic editing, we have to know that latest development, and as well as we have to interlink that development with the basic science. Yeah, if gene editing is there, so we have to study the gene editing just like CRISPR-Cas9. But apart from that, we have to know what is DNA, what is palindromic sequence, and how the gene editing has been done. Okay? So, and with this, let us see. In 2020, there were questions from space and technology, 1 question, physics and electrical, 1 question, ICT and gadget, 4 questions, and biotechnology, 5 questions. So see, UPSC nowadays is more emphasizing on biotechnology. ठीक है ना? Biotechnology, ठीक है? Biotechnology. It is more emphasizing on biotechnology because see, more than 5 questions have been asked in 2020, and ICT and gadget 4 questions. If you see 2019, then physics 1, ICT 4, biotechnology again 6 question. So just by analyzing 2 years paper, we come to know the demand of UPSC. Demand of UPSC. It is more or less focusing on the recent development of biotechnology in the field of biotechnology. Okay. In 2018, अच्छा ठीक वो खुला नहीं है. So now we will analyze the question paper for 2018. There 1 question from physics, space and technology 2 question, ICT 5 question, again biotechnology 5 questions. So these again forms an important part. ठीक है ना? If we analyze the 2017, we will see that there were questions from public health 2 questions, ICT 2 questions, space and physics 2 questions. ठीक है? Okay, so now what to study and how to study. First of all, we should know what is basic science. We should make ourselves familiar regarding the basic science. And for basic science, we should study from 6th to 10th NCERT. But yeah, we should focus on the core concept area. Analytical area, and we should not study the numerical part. UPSC basically demands from us to just have a basic awareness regarding the technologies and to have our own analytical skills. So we will see what to study in physics, chemistry,
and biology, and after that the recent developments, biotechnology, space and all those things. Okay, basic science, what to study. Physics, suppose in the case of physics, basic concept regarding the following: graphene, Big Bang theory, dark matter, neutrino, Higgs boson particle. All other latest development. So our concept, our basic concept regarding all this technology should be cleared. ठीक है? Concepts, that is force in nature, naturally occurring phenomena. Now see, if you analyze the previous year question, it is, I am reiterating again and again, it is very important to go through the previous year paper. ठीक है, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर को फॉलो करते हैं तभी हम समझ पाएंगे कि यूपीएससी क्या खोज रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस वे बना रहे हैं. ठीक है, सो इफ विल एनालाइज द क्वेश्चन फ्रॉम 2009 to 2014 onwards, there were some sorts of question from basic science, that is physics, chemistry and biology. So I have gone through those papers and I have made the notes what to study and what types of questions were been asked. ठीक है, जैसे मान के चलिए, what causes a rainbow? They have not asked what is rainbow. They wanted to know what are the factors that is responsible for the formation of rainbow. ठीक है, dispersion in nature, a spectrum, total internal reflection. What is total internal reflection? ठीक है, total internal reflection. जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि डायमंड इतना क्यों ग्लो करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायमंड टू ग्लो, तो आपको पता होना चाहिए किस लिए ग्लो करता है, वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यूपीएससी इसी तरह क्वेश्चन पूछती है. जैसे मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कि न्यूज़पेपर है, सो हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ इंक गिर गया है तो व्हाट विल डू, विल टेक द न्यूज़पेपर और वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा. इतना तो हमें पता है, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट न्यूज़पेपर टू एब्जॉर्ब द इंक. इट इज़ सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन. ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बेसिक की सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है. जैसे इस फील्ड में कैपिलरी एक्शन है. ठीक है, जैसे ठीक है, ओके. व्हाई डज सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, व्हाट इज अ पोल स्टार, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन. दे विल क्रिएट सच ए सिचुएशन कि मान के चलिए कि जो सपोज लिक्विड है, अगर हम उसे लिक्विड है, सपोज लिक्विड ड्रॉप होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप. सो व्हाट आर द बेसिक साइंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल शेप. क्यों लिक्विड हमेशा स्फेरिकल शेप में ही रहता है, वो क्यों फ्लैट नहीं होता है. सो वी शुड नो द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग इट. ठीक है, तो उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है, सरफेस टेंशन. तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है. दे विल नॉट आस्क व्हाट इज द डायमेंशन फॉर सरफेस टेंशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन. वो आपसे चाहती है कि आपको सरफेस टेंशन पता हो कि सरफेस टेंशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, फेनोमेना रिलेटेड टू हीट एंड लाइट. ठीक है, अब केमिस्ट्री में हमें क्या स्टडी करना है, व्हाट टू स्टडी इन केमिस्ट्री. ठीक है, जनरल फेनोमेना ऑफ केमिस्ट्री और द केमिकल चेंज लाइक एक्सपेंशन ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो. ओके, ये हो गया. जैसे कार्बन डेटिंग प्रोसेस पढ़ना होगा हमें, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, थोरियम, यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना पड़ेगा. न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, कौन कौन से हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैवी वाटर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर मॉडरेटर. ठीक है ना, उसके बाद इंडिया न्यूक्लियर 3 स्टेज प्रोग्राम. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, टर्म्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट, आइसोटोप्स, आर्टिफिशियल रेन क्यों होता है, वो हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए. ठीक है, नाउ सी बायोलॉजी में we have analyzed the previous year question and we come to know that this is the core area
where UPSC is emphasizing more, where UPSC is emphasizing more nowadays, because हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में प्लस बायोलॉजी में मोरलेस 6 क्वेश्चंस रहते हैं, मोरलेस 6 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना. इफ़ यू वांट टू नो बायोटेक्नोलॉजी वी शुड हैव ए बेसिक आइडिया रिगार्डिंग बायोलॉजी. सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, जीन एडिटिंग कैसे होता है, CRISPR-Cas9 क्या है, ये सब कब हम समझ पाएंगे. ये सब अप्लाइड पार्ट है. अप्लाइड पार्ट को समझने के लिए हमें बायोलॉजी समझना बहुत ही ज़रूरी है. एंड व्हेन UPSC विल फॉर्मुलेट द क्वेश्चन, डेफिनेटली आउट ऑफ 4 ऑप्शंस one will be regarding basic science, one will be regarding basic science. So बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए we should have a bit concept regarding biology, bit concept regarding biology. अब बायोलॉजी में क्या स्टडी करना है, जस्ट लेट अस हैव ए ब्रीफ आइडिया, ठीक है. सो फोकस, cause for ripening of fruits and how can it be delayed, transplanting of seeds, advantages, disadvantages, natural process of animal and plants like cell biology, photosynthesis in plant, carbohydrate and proteins, trans fats, ठीक है, omega fatty acids, focus on properties, properties of oil and water, ठीक है, blood group, DNA sequencing, DNA related concepts like chromosome, DNA fingerprint, HIV. These are the basic concepts. Suppose if there will be a question, I think in 2021 regarding CRISPR-Cas9 technology, then one or more option will be related to like DNA, RNA, guide RNA, ठीक है ना. So we should have awareness regarding these basic terms. I'm not asking you to know, to study like how a NEET aspirant is preparing, but we should have at least basic concept cleared, ठीक है. Disease like TB, cholera, foot and mouth disease. Focus on the recent outbreak of disease like coronavirus, different types of waterborne disease and airborne disease, stem cells. Yeah, stem cells. This is a recent development. We should know completely about stem cells. What are the properties of stem cell? What are the different types of stem cell? What are the different types of stem cell? What are the different types of stem cells? ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम सेल्स और उनके यूजेस, ठीक है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम सेल, जैसे एम्ब्रियोनिक सेल एंड एडल्ट सेल. तो एम्ब्रियोनिक सेल हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट सेल कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए. बेसिक, आई एम फोकसिंग मोर ऑन बेसिक, आई एम नॉट, ठीक है. वायरस एंड बैक्टीरिया, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है. Now comes biotechnology. More than 5 to 6 questions have been asked in the previous year from biotechnology. So we should know from where they are asking the questions. Yeah, regarding this basic physics, chemistry and biology, we should know the basic concepts from NCERT, that is 6 to 10. That is enough. And apart from that, from 11th, 12th, we have to study the selective chapters, that is environment and biotechnology, to just have an idea. Biotechnology, it's a very growing field. So we should know which topics to study and which topics we should not to study. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, अगर हम सिंपली देखेंगे, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म to create a product. Simply, it's called biotechnology. जैसे इसको बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. जैसे मान के चलिए कि बेकिंग ऑफ ब्रेड. व्हाट बेकिंग ऑफ ब्रेड? सो ब्रेड इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज हमें ब्रेड प्रिपेयर करने के लिए वी आर यूजिंग द ईस्ट. ओके, ब्रेड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग वी आर यूजिंग द ईस्ट, ठीक है. सो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. After that we are getting a product. So this technology is called biotechnology, ठीक है. So
अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो वी शुड स्टडी अबाउट इंडस्ट्रियल जेनेटिक्स, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, न्यूक्लिक्स एंड प्रोब्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें स्टडी करनी है। एंड लाइक बायोलॉजिकल फ्यूल जनरेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स फ्रॉम बायोमास, बायो मिथानॉल, बायोडीजल, मीथेन, हाइड्रोजन। ठीक है ना, सो जेनेटिक अगर वी विल सी what are the core area where we should focus in biotechnology। so जैसे मान के चलिए कि gene editing it has become one of the core area where UPSC are asking question from last 2 years। there have been continuous question from CRISPR-Cas9 ठीक है, रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, उसमें क्या करना है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जैसे मान के चलिए कि हमें हाउ वी कैन यूज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बेनिफिशियल टू द एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मान के चलिए कि बायो रिमीडिएशन है। बायो रिमीडिएशन क्या है, सिंपली देखिए, अगर बायो रिमीडिएशन को हम पढ़ते हैं देन बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रिमीडिएशन मीन्स टू डिग्रेड द पोल्यूटेंट, टू डिग्रेड द पोल्यूटेंट। सो bioremediation, it's a field in biotechnology through which by the application of living organism we are trying to degrade the pollutant, like oil vapor, जो oil vapor है, oil vapor bacteria है, it is used for degrading the oil spillage, ठीक है, detect and monitoring of pollutant, microbes and the geological environment sustainability and clean technology, ठीक है ना, and plant biotechnology, forest biotechnology। ठीक है, एनिमल एंड इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमें, जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जेनेटिक इंजीनियर्ड हार्मोन एंड वैक्सीन्स, हार्मोन जैसे हम लोगों ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, सो वी शुड स्टडी एनिमल्स ऑर्गन फॉर ह्यूमन पेशेंट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट, जैसे अभी वी नो दैट मॉस्किटो is a vector or carrier for malaria, ठीक है ना, मलेरिया। अब क्या किया है, with the application of gene editing technique, we have edited a gene called FREP1 in Gambia mosquito, ठीक है ना। सो इस जीन एडिटिंग के थ्रू क्या हो गया, हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया ताकि जो पैरासाइट्स हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया, दे वॉन्ट सर्वाइव इन दिस मॉस्किटो, ठीक है। उसके बाद फूड एंड बेवरेज बायोटेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज फर्मेंटेशन कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फूड्स, एंजाइम्स एंड फूड प्रोसेसिंग कैसे यूज़ करते हैं हम एंजाइम्स को, जैसे हमने पढ़ा कि ईस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं in baking of bread, amino acids, vitamins and sweeteners, organic acids, polysaccharides। ठीक है, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, हाउ वी आर गोइंग टू यूज बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू क्रिएट नैनो
डिलीवरी सिस्टम, नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, डिलीवरी सिस्टम, nano drug delivery system, and that is biodegradable in nature. So with the application of this nano drug delivery system, something is injected into the body, into the specific cell, and after that when the cell or that portion of the infected things recovered, it is biodegradable in nature, it will automatically degrade. ठीक है. एंटीबायोटिक्स क्या है? वैक्सीन्स एंड मोनो एंटीबायोटिक्स, biopharmaceuticals and therapeutic molecular and human disease, cell gene therapy, etc. Protection of biotechnology invention, that is plant patent protection and trade secrets, plant breeding rights we will study. ठीक है. Now स्पेस टेक्नोलॉजी. अब स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? वी हैव सीन दैट 1 or 2 questions it will be there in prelims regarding space technology. Now space technology is a very vast field, so what to study in space technology? ठीक है. टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, कितने तरह के ऑर्बिट होते हैं? लाइक लो अर्थ ऑर्बिट, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है. सो वी शुड हैव बेसिक कंसेप्ट क्लियर रिगार्डिंग दिस ऑर्बिट. लॉन्च व्हीकल, कितने तरीके के लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, कितने तरीके के लॉन्च व्हीकल होते हैं? जैसे मान के चलिए SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, MK सीरीज 1, 2, 3. वी विल स्टडी रिगार्डिंग ऑल द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन इंडिया. इनसेट सैटेलाइट्स क्या है? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन क्या है? क्रायोजेनिक रॉकेट क्या होता है? वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग द क्रायोजेनिक साइंस, cryogenic science, because we have indigenously developed the cryogenic technology. Regional navigation satellite system, we have to study it completely. ठीक है. गगन क्या है? चंद्रयान 1 and 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. स्पेस जंक, स्पेस डेब्रिस, it has been continuously surfacing in the news from the last 2 years, so we should have clear idea regarding this. Kepler syndrome, ये भी क्या होता है? We should have a complete idea. Recent updates. ठीक है. डिफेंस सिस्टम. सो व्हाट टू स्टडी नो डिफेंस सिस्टम? मिसाइल सिस्टम एंड इट्स डेवलपमेंट, प्रोपल्सन सिस्टम, रैमजेट इंजन क्या होते हैं, स्कैमजेट इंजन क्या होते हैं, ठीक है. वी शुड हैव एन आइडिया रिगार्डिंग इट. इंडियन सबमरीन्स क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है, अनमैन्ड एयर व्हीकल क्या है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है, केमिकल वेपन्स क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स क्या है. ठीक है. न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है. सो वी शुड हैव ए कंप्लीट आइडिया रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है. तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन होता है, फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कितने तरीके के होते हैं. न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, वी आर हैविंग ए 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, 3 स्टेज, ठीक है. न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन, इशू ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है. सो बेसिकली इन न्यूक्लियर एनर्जी वी शुड नो व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट इज फ्यूजन, what is the purpose of moderator, what is heavy water, ठीक है. what is the purpose of why we are using uranium, what is the purpose of thorium, why we are having 3-stage program for nuclear development. Basically we are having the 3-stage program because in India we do not have so much reserves for uranium, so we have to depend on import. But since we are non-signatory to the NPT treaty, it creates a hurdle. So that is why in the beginning itself we have developed this 3-stage program. At the end we are focusing to use thorium as a fuel, because in India we are having the 75% of the world reserves of thorium, and it is found in the monazite sands of Kerala, Andhra Pradesh, Odisha. So because of thorium reserves we are focusing on 3-stage program, ठीक है. अब
Information and communication technology. You have to study in information and communication technology. Basic of latest technology, artificial intelligence. Artificial intelligence क्या है? Artificial intelligence क्या है? ठीक है? And Internet of Things क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, लाईफाई क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाईफाई वाईफाई क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाईफाई वाईफाई, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फील्ड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, in the fields of agriculture, in the fields of gaming, in the fields of textiles, ठीक है. So we should know difference between Bluetooth, Wi-Fi, Li-Fi, application of IT, import, government initiative, BharatNet project, all the recent updates we have to study. All the recent updates we have to study. Big data initiative, cyber crime and security, ठीक है. रिसेंट डेवलपमेंट इन IT एंड टेलीकॉम क्या क्या है, साइबर स्वच्छता केंद्र, भारत QR कोड क्या है, स्मार्ट क्रेडिट कार्ड क्या है, भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सिम, डिजास्टर मैनेजमेंट नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ठीक है. नाउ नैनो टेक्नोलॉजी एंड nano science and nanotechnology. But what is basically nano science and nanotechnology? It deals with the development of product. It deals with the development of product in the range of 1 to 100, in the range of 1 to 100 nanometer, in the nanometer, ठीक है, that is 10 to the power 9 meter. If any product is created in the range of this 1 to 100 nanometers, it comes under the nanotechnology. It comes under the nanotechnology, ठीक है. So first of all we should know the basic of nanoscience, application of nanotechnology. हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? in the fields of medicine we can use this nanotechnology. In the fields of agriculture also we can use this nanotechnology. In the fields of bioremediation also we can use this technology. In the future course of time we can use this technology for the filtration of water, ठीक है, filtration of water by the use of nano filters, ठीक है. Impacts of nanotechnology, social and ethical impact, nanoscience and nanotechnology in India. ठीक है. Now what is robotics? Artificial intelligence application of robotics, ठीक है. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज ए कंप्यूटर इन सिंपल लैंग्वेज इफ यू से कंप्यूटर बेस्ड मशीन दैट हैव कॉग्निटिव थिंकिंग, जो कि इंसान के जैसा सोच सकता है, दैट हैव कॉग्निटिव थिंकिंग, ठीक है, दैट हैव कॉग्निटिव थिंकिंग, ठीक है. तो ये एक तरह का such a machine is there, it can also act as a robot, ठीक है, ठीक है. So we have studied regarding the syllabus of science and technology for prelims as well as mains, but if we analyze the previous year's paper, we will see that 50 to 60% of the questions are from the recent development, and 30 to 40 questions are from static in nature. But more or less all the questions, if we will analyze, we will see that UPSC wants us to analyze the thing. बोलते हैं ना रटाफिकेशन ऑफ फैक्ट UPSC में नहीं चलेगा, ठीक है. तो we have to analyze the fact. But if we will consider the mains paper, UPSC is focusing more on its application part, regulatory mechanism, ethical domain, ठीक है ना. So अभी हम लोग क्या करते हैं, we have seen our syllabus. Now we will analyze some of our mains question. So that we will have a clear picture कि what UPSC demands from the student. So just
for the purpose of convenience for you guys, we will see what type of questions are asked. ठीक है, जैसे देखिए, why is there so much activity in the field of biotechnology, in our country, and how has this activity benefited in the field of biopharma? That means it is asking what is biotechnology and what is the application of this field in biopharma, ठीक है. So this is application based. We should know the application of biotechnology in the field of biopharma, ठीक है, in the field of biopharma. स्टीम सेल थेरेपी, क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया है. स्टीम सेल थेरेपी इज गेनिंग पॉपुलरिटी इन इंडिया टू ट्रीट ए वाइड वेराइटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग थैलेसेमिया, डैमेज कॉर्निया, सेवरल बर्न्स. डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टीम सेल थेरेपी इज and what advantage it has over the other treatment. So from this question we will come to know that UPSC wants us to know what is stem cell therapy, what are its application, how stem cell therapy is used to address the problem of thalassemia and all those things, and what are the advantages. So more or less from this question also we will come to know, it is simply asking, we should know what is stem cell therapy and its diverse application and its recent development. जैसे if I remember, a cornea was developed by using stem cell therapy. So because of that only this question has surfaced. ठीक है. Now what are the areas of prohibitive labor that can be sustainably managed by robots? Discuss the initiative that can propel research in premier research institution for the substantive and gainful innovations. So from this question we will know that it is asking what is robotics, and जैसे मान के चलिए कि manually it is very difficult for the जैसे some portions of the work are there where it is very difficult for the human to do it, like the things, if we consider the sanitation, cleaning of drainage system, all those things, it is very difficult for the human to do it. So for that purpose we can use the robot. Robot, if it is properly programmed, the robot can play a big role. ठीक है. तो ये भी मोर और उसके एप्लीकेशन बेस्ड ही है. ठीक है. What is an FRP compost material? How are they manufactured? Discuss their application. ठीक है. And how, let's see. ठीक है. Now some more questions. What is India plan to have its own space station? Why is India is planning to have its own space station? ठीक है. And how will it benefit our space program? ठीक है. How is the government of India protecting the traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceuticals companies? Give an account of the growth and development of nuclear science and technology in India. What is the advantage of fastest breeder reactor program? Here also if you'll see, we should know the nuclear program in India and what is the purpose of inducting this fast breeder reactor program. What is the advantage? ठीक है, हमें पता होना चाहिए. Discuss India's achievement in the field of space science, and technology. How the application of this technology has helped India in the socio-economic development. ठीक है. And what is nanotechnology? Why is nanotechnology one of the key technologies of the 21st century? Discuss the salient features of Indian government's mission on nanoscience and technology and scope of its application in development process. So we have analyzed last 4 to 5 years question. And from this question we have seen some trends. कि UPSC क्या चाह रही है. So let us jot down. First, we should have complete awareness regarding the technology. Second is your application based, where it is applied, what is its application in the field of biopharma, how it can be applied in the field of agriculture. ठीक है. Third is advantages. ठीक है. इतना मतलब
if we are studying something, we should know its awareness, its application part, its regulatory mechanism, as well as its advantage. Yeah, if there is certain concern in the ethical domain field, we should also know it. So this is what we have studied regarding decoding of science and technology, both for prelims and mains, and I hope कि I am able to decode science and tech for prelims and mains properly, and you guys, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? So okay, stay safe, stay healthy.